everyone. In today's podcast, we are going to talk about the failures as the stepping stones to success. So, how can a business owner overcome the challenges, learn from it, and move to the greater heights? Stay tuned. Hello, everyone. Welcome all to the brand new episode of the Business Queens. Today, we have on the show Miss Ruchi Rathor, who is the founder of Payomatix. Ruchi, welcome to the show. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure to have you here today. Thank you. Actually, it's my pleasure also. Finally, I got to talk to you. We were planning it for many days. Yes. But finally. Yeah. So, Ruchi, tell us something about your organization. How did you thought of the idea of coming up with this organization? Like, what was the idea behind it, motivation behind it? Yeah. So basically, I am not from management or these kind of fields. I'm totally a techie. I had completed my BTech. I did my MSc in electronics. I did my PGDCA. And finally, we started a computer center. I belong to Agra, and we started a computer center in Agra to give computer education to MCA and BTech and MTech students. So we had a lot of computers, around 20 systems in our computer center, and then we got an information from one of our friends that the concept of call centers in India is growing. That was year 2001, 2002, and call centers were new over here. And we thought it's a great opportunity to get into the call centers industry. We had the infrastructure, we had everything. तो हमने क्या किया कि अपने सारे जो कंप्यूटर सेंटर जो एजुकेशन वाला था उसी में एक एक्सपेरिमेंट किया कि let's start a call center. So we got clients from UK, from US, from Australia, and we started with selling mobile phones to UK customers, to Australian customers. And then we got into mortgages. So हमें mortgages के बहुत अच्छे clients मिल गए, and the commissions that we were getting for those sales that were also great. तो mortgages चले, and बहुत अच्छी जिंदगी चली 2009 तक, for instance 2002 to 2009. और 2009 में US में subprime mortgages की वजह से एकदम से fall आया, सबको पता है 2009 में. Yes. So that recession actually caused all of our call centers to shut down because all the mortgages clients and everything, the operations were closed, and उनके operations closed हुए तो असर हम पे पड़ा. We got no sales, सारे contracts खत्म हो गए. And for 6 months, actually we were just struggling to find, क्योंकि आप एक चीज में सेट हो जाते हो, आपने सालों उस चीज में काम किया और अचानक एक दिन एकाएक वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो फिर आपको लगता है कि ओके व्हाट नेक्स्ट. 6 महीने तक कुछ भी नहीं था, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं. देन वी हैड अ क्लाइंट फ्रॉम यूके जो हमारे मोबाइल्स के क्लाइंट्स थे. तो उन्होंने बोला कि see, there is something I can do for you. I'm having contacts with payment processing companies over here in Europe and UK, and they are always looking out for agents who can actually sell their services as referral partners, and then you get a commission. So because उसके अलावा कुछ था नहीं उस वक्त करने के लिए इंडिया में यहाँ पे. तो हमने कहा चलो ठीक है, इसमें भी ट्राई कर लेते, because we had very good connections all over the world with the call centers, and call centers always needed payment processing for various different things. तो हमने वहां से शुरुआत करी as an ISO, as an agent, and the first company that we worked with was Allied Wallet. अभी तो वो नहीं है, कंपनी बंद हो चुकी है, but at that time that was the first company, and we worked as an agent, as an independent service partner for them. और वहां से हमारा पेमेंट्स का सफर शुरू हुआ, and I started getting okay, what are payments all about. वहां से जब शुरुआत हुई तो 2013 तक एक्चुअली हमने वर्क किया बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंट्स की तरह ही. सो वी वर्क विद नॉट ओनली विद दैट स्पेसिफिक कंपनी, वी वर्क विद द payment giants all over the world. So we have been partners with Elavon, with First Data, Pfizer, Paysafe, Paycharge, Nuvei. You talk of the the payment partner, and we know them personally, the heads and the founders.
2013 में हमें लगा कि केवल आईएसओ की तरह काम करने में मजा नहीं आ रहा एक्चुअली इट वाज वर्किंग वेल बट कुछ नया करना था एंड आई न्यू दैट आई एम फ्रॉम टेक और पेमेंट्स मुझे पता है सो इफ आई गो इनटू द पेमेंट गेटवे टेक्निकलिटीज द सॉफ्टवेयर तो उससे एक ब्रांड भी बनेगा एक पहचान भी मिलेगी एंड द बिजनेस कैन एक्चुअली स्केल बिकॉज आईएसओ की तरह आप कितना काम कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आप हैंडल नहीं कर रहे हो आप सिर्फ क्या कर रहे हो एक को दूसरे से मिला रहे हो मर्चेंट को आप प्रोसेसर से मिला रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग कमीशंस इन बिटवीन सो आई वांटेड टू गेट इनटू टेक्नोलॉजी जस्ट बिकॉज मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि आई एम डूइंग समथिंग गुड and then we went into the technology and we started setting up our own payment gateway and that was the actual milestone jahan se zindagi change honi shuru hui so in 6 to 8 months we developed our first MVP and हमने दिखाया अपने ही partners को TSPs को कि this is something we have developed this is a payment gateway which we can white label for you and we can actually give it to you as a payment software and luckily वक्त पे देखिए या तो बहुत बड़े नाम थे जैसे NMI है जैसे authorize.net है ये बहुत बड़े नाम थे इनके साथ हर कोई काम भी नहीं कर सकता था बिकॉज उनके अप्रूवल्स उनके वो व्हाइट लेबल नहीं करते थे तो अगर आप चाहिए तो authorize.net का ही गेटवे आपके पास में आएगा उस पर वही नाम लिखा हुआ होगा बट देयर वर कंपनीज हु वांटेड टू व्हाइट लेबल वो चाहते थे कि उनके पास ऐसा पेमेंट गेटवे हो जो उनकी कंपनी का नाम लिखा है तो वी गॉट इनटू द मार्केट एट द राइट टाइम एक्चुअली ये टाइमिंग का बहुत बिकॉज एट दैट टाइम कोई प्रोवाइडर था नहीं अभी बहुत तो उस वक्त में वो चीज जब हिट गई एंड द टेक्नोलॉजी बिकेम फेमस यू नो वी catered to more than 60-70 companies up till now with our proprietary software and that software kept on adding functionalities and different things since that time तो 2013 में जो था और 2023 में आज जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है एवरी मोमेंट एवरी मंथ वी आर एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज अच्छा इनिशियली वी वेंट टू ग्लोबल पेमेंट्स तो मुझे इंडिया का कुछ पता नहीं था आई वाज इन यूके आई केम बैक फ्रॉम यूके इन 2019 और चांस की बात है आप फेट बोल लीजिए कि 2020 में कोविड आ गया और सारा मूवमेंट हो गया आई कुडंट गो बैक जब वापस नहीं जाना और मुझे लगा कि भाई अभी तो साल 2 साल तक हो ही नहीं पाएगा वीजा भी प्रॉब्लम दे जाएगा एक्सपायर हो जाएगा एंड आई वोंट बी एबल टू रिन्यू इट तो और यूके गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योर वीजा भी बंद कर दिया उसी साल 2019 में ये तो कि अगर हम यहाँ के होके और ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं ग्लोबली तो ये तो अपना देश है व्हाई कांट वी डू समथिंग ओवर हियर So we started Payomatix in 2020 actually at the time of COVID हमने सोचा कि कुछ नहीं से तो कुछ तो करते हैं 1 साल 2 साल जब घर में ही बंद रहना है तो let's do something and चांस की बात थी that it clicked टेक्नोलॉजी में हमारा अच्छा मतलब पकड़ थी पेमेंट पार्टनर्स को हम अच्छी तरीके से जानते थे इट वाज जस्ट दैट वी हैड टू टॉक टू पीपल और बैंक्स हु वर प्रोवाइडिंग दोस सॉल्यूशंस इन इंडिया रादर देन ग्लोबल Right. And then we had the connections, we had those partnerships, and by God's grace, जो चीजें लोग सालों में कर पाते हैं we achieve that in 1 or 2 years. Within 2 years we have a name, we have हमें एक पहचान है, हर जगह लोग recognize करते हैं, and I got the leverage because मेरा payments industry में सब लोग वैसे भी जानते थे globally, तो मतलब नाम से थोड़ा बहुत फायदा मिला कि अच्छा ये आपका है, okay let's move forward with this. Right. So finally today we are totally into tech related to payments, but it's worth for us. Yeah. So, whatever you have shared so far, there are two very important things that you have highlighted. One is using your USP. There are many people जिनको अपना USP clear नहीं होता. They don't know what are they actually selling to the customer. So you had a perfect USP at that time. Second is leveraging your strengths. So you somehow leverage your strength to enter the market. So this is extremely good. So were there any particular challenges you faced at that time and how did you overcome that? Yes. See, whenever you are starting up something, as an independent, see, freelancer की तरह काम करना एक बिल्कुल different चीज होती है. आपको खुद मेहनत करनी है, आप जो खुद मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा. But when you are starting a company, there are various factors. और वो फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी टीम अगर आपके पास टीम नहीं है अगर आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हो यू डोंट हैव अ गुड टीम टेक्निकल टीम ही नहीं है तो आप क्या बनाओगे क्या आप अकेले तो सब कुछ नहीं डेवलप कर सकते बट देन अगेन आई वाज वेरी लकी
So I'll tell you a story. The first person who joined me in my technical team was a person, a boy called Harsu. अब ये Okay. जो हर्षुक है ये गुजरात से अहमदाबाद से था और यू वुड बिलीव इशली दिस पर्सन वाज फ्रॉम अ विलेज इन अहमदाबाद वो जो थैच रूफ्स होते हैं ना उस Hmm. वैसे घर से My God. एंड बट ही या एंड बट द काइंड ऑफ कोडिंग स्किल्स ही हैड ना Hmm. वो बिल्कुल अलग ही लेवल की थी उसको बात करने का नहीं आता था बिकॉज अगर मैं उसको किसी क्लाइंट से बात करूँ बात भी नहीं कर पाएगा बट Hmm. ही न्यू दैट ओके अगर उसको बता दिया कि हर्षुक ये ऐसे ऐसे बनाना है तो वो कैसे बनाना है उसको कैसे कोड करना है वो एग्जैक्टली पता था Hmm. कोड करने में मतलब उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं ना जैसे कोई मैसेज लिखना है कहीं वो भी गलत हो जाते थे तो आई यूज टू तो मैं और हर्षुक साथ में बैठे थे एंड देन वी स्टार्टेड यू नो कोडिंग ऑल दोस थिंग्स तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टअप्स में आता है जनरली और मुझे भी आया दैट वी कैन नॉट गेट अ गुड टीम आपको एक प्रोफेशनल टीम नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में Hmm. रीजन कि देखिए अगर HCL हायर कर रहा है किसी को Hmm. और वो केवल आपको लेट्स से एक्स अमाउंट दे रहा है Hmm. तो भी लोग उसमें जाएंगे व्हाई बिकॉज इट्स अ रिनाउंड नेम HCL एक Right. रिनाउंड नेम है अभी कंपनी का एक वो Hmm. लगेगा लेकिन अगर लेट्स से मैंने आज एक कंपनी स्टार्ट की जिसको मार्केट में कोई नहीं जानता Hmm. और मैं उसको 2x भी ऑफर करूं कि भाई Hmm. HCL आपको लेट्स से 50,000 दे रहा है आई विल गिव यू 1 लाख the person will be hesitant to join me why because उसको नहीं पता पहली बात ब्रांड नेम नहीं है Hmm. दूसरी बात उसको इनसिक्योरिटी लगती है कि पता नहीं आज हायर करेंगे कल नहीं चली कंपनी तो निकाल के Hmm. बाहर करेंगे या समथिंग लाइक स्टार्टअप्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं Hmm. the second problem the second challenge of any startup not only me the second challenge of any startup is to actually get the cash flow you know going किस तरीके से फंड्स की मैनेज बिकॉज अगर आप हायर करते हैं एक टीम हायर करते हैं उनकी सैलरीज आपको देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर हैं तो सर्वर्स का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी है तो जो भी टेक स्टैक आप ले रहे हो उसका कॉस्ट आपको देना पड़ेगा तो या तो आपके पास में उतना पैसा हो कि लेट्स से ओके 6 मंथ्स तक 7 मंथ्स तक आई कैन एक्चुअली इवन अगर 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होता है या कहीं से नहीं आता तो आई कैन सर्वाइव Right. अदरवाइज आपके पास में एक बैकएंड में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कोई दूसरा बिजनेस हो या कहीं से कोई रिकरिंग इनकम आ रही हो जो आप यहाँ पे पुल इन कर सकते हैं टू गेट दिस सिस्टम सेटअप तो फॉर्चुनेटली I had my other businesses when I started Payomatix I had my ISO thing going on तो Hmm. मैंने उसको बंद नहीं किया था तो Hmm. जो वहां से इनकम आती थी I used to put this over here Hmm. दूसरा हमारे जो व्हाइट लेबल्स पुराने जो ग्लोबल व्हाइट लेबल्स थे वहां से भी पैसा आता था तो Hmm. वो पैसा यहाँ पे लगा के सो आई हैड दैट फंडिंग एंड देन आई गॉट हर्षुक एज अ Hmm. मुझे भगवान ने नहीं भेजा था बिल्कुल वो बिल्कुल तो उसने वो पूरी टीम तैयार की एंड trust me it's been 8 years now since we started making gateways और वो सारी चीजें we have a team of 50 people and Harsuk is the leader and that Hmm. boy who started 8 9 years ago from that thatched roof is having everything possible for a person you know working in the tech industry today so relationships भी matter करते हैं and those relationships worked out very well for me so Right. these were the basic two challenges and मेरे लिए भी नहीं एक्चुअली आप कहीं भी किसी भी स्टार्टअप में Hmm. जाएंगे दो चीजें अगर आपको एक अच्छी टीम मिल जाती है और दूसरा अगर आपके पास फंडिंग का इंतजाम हो जाता है चाहे वो किसी इन्वेस्टर के थ्रू हो चाहे वो आपके आपके फंड्स हैं किसी आपकी फैमिली ने हेल्प कर दिया तो फिर आप सर्वाइव कर जाएंगे Hmm, hmm. And you know, this is the wisest thing one can ever do. I have seen people ki startup karna hai, I have a good idea. They are quitting their jobs, you know, putting all their savings in the business, but business needs a constant cash flow. And after 6 months or so, they are like, we have to pay this, we have to do this. And tell me one thing, how would you market yourself? No matter you have the bestest of the product, you need funds to market yourself as well. And then when I talk to business women owners who are you know women entrepreneurs who are working in this initial stages, like they are the owners of small businesses, when I ask them, okay, what is your marketing budget, they're like, we'll be investing 10,000, 20,000. I'm saying, what? I mean, nothing would happen in 10,000, 20,000. People still feel that if they have a very good product, they don't have to market themselves. So this is something they really need to think about. And managing cash flow is a challenge for initial stages. It is the challenge for everybody. So once you start up your business, this is very, very crucial that you plan all these things upfront.
that after 6 months down the line, 1 year down the line, because initially you are not going to earn huge profits, that everything can be funded. Yes, you can be lucky enough, like you entered the market at the right time, your product was a perfect market fit. It might happen, but it is only in 2 to 5% of the cases. 95% of the cases, they have to think of the funding thing. And this is very, very important. I really hope our audience learn from this. And then they start running for the funding, that I want to get it funded, I want to get it funded. अरे भाई, investors, Exactly. you have to answer. ठीक है, funding कर ली, but कुछ तो हो investors को देने के लिए. बिल्कुल. Why would somebody invest in you? Exactly. Yeah. So Right. tell us something more about what kind of services you give, and especially if I talk from the point of view of small and medium business owners, if they get associated with you, how would they benefit out of it? Okay, so basically we are into 3 different verticals. एक हमारा tech stack है. So we are providing a payment gateway and a cashier system. Okay. Now, what is the difference between a payment gateway and a cashier system? Hmm. Payment gateway is something where the processor or the bank will be integrated with your software on the back end through an API. और उसी API को जो भी आपके merchants हैं, जो आपके businesses हैं, उन्होंने अपने website पे integrate किया. और फिर उस पेमेंट गेटवे के थ्रू प्रोसेसिंग शुरू हो गई. मान लीजिए आपने रेजर पे को पीछे से इंटीग्रेट कर दिया, या पेयू को कर दिया, या एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कैशियर सिस्टम इज अ लिटिल डिफरेंट. सो कैशियर सिस्टम में क्या होगा, एक सिंगल एपीआई है, फ्रंट एंड आपका एक है, लेकिन बैक एंड पे मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर्स आपके साथ में इंटीग्रेटेड है. Now, the transactions that are going through the customer's website to these payment gateways are based on certain rules. तो मान लीजिए कि मेरे को चाहिए कि लेट्स से जितने मेरी सेल्स गुजरात से आ रही हैं वो लेट्स से पेमेंट गेटवे नंबर 1 में जाए, जो महाराष्ट्र से आ रही है वो पेमेंट गेटवे नंबर 2 में जाए, जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं वो पेमेंट गेटवे नंबर 3 में जाए, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहे हैं वो पेमेंट गेटवे नंबर 4 पे जाए. सिमिलरली हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे, मान लीजिए 1000 के नीचे का सेल है तो इस वाले गेटवे पे, 1000 के ऊपर है तो दूसरे पे जाए. तो डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस के बेसिस पे आप अपने कहाँ पे राउट हो रही है पेमेंट उसको चेंज कर सकते हैं. ओके. सेकेंडली, कैशियर सिस्टम में हमने ऐसे सेटअप कर रखा है कि हम एमआईडी कैस्केडिंग कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप एक मर्चेंट हैं और आपका लेट्स से दिन का 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आप नहीं चाहते कि आपके 3 लाख रुपए एक ही पेमेंट गेटवे पे जाए. सो यू वांट टू डिवाइड देम एंड यू वांट कि ठीक है, पहले 1 लाख तक इस पेमेंट गेटवे नंबर 1 पे जाए, उसके बाद 2 पे, उसके बाद 3 पे. तो आप कैस्केड कर सकते हैं एमआईडीज को कि पहला ट्रांजैक्शन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा जाए, ताकि वो इवनली डिवाइडेड रहे. सो द कैशियर सिस्टम दैट वी आर प्रोवाइडिंग, हाउ डज इट हेल्प स्मॉल बिजनेसेस, इवन लार्जर बिजनेसेस. नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास में रेजर पे और पेयू के 2 अकाउंट्स हैं, और आपके कस्टमर्स जो हैं रेजर पे पे जुड़े हुए हैं, और बाय चांस आपको पता नहीं चला, आप तो किसी अपनी दूसरी चीज में बिजी हैं और आपकी रेजर पे की एमआईडी पीछे से डाउन हो गई और आपके कस्टमर्स आपको पे ही नहीं कर पा रहे. आपको ये बात शाम को पता चलती है जब आप अपने वापस ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, आपने बैकएंड को पता, तो आपने पूरे एक दिन की सेल्स आपको पता ही नहीं चला, आपने खो दी. यहाँ पे सिस्टम में क्या होगा कि अगर एक एमआईडी डाउन हुई है तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ओवर कर जाएगा दूसरे एमआईडी के लिए. अगर लगातार लेट्स से 4 ट्रांजैक्शंस फेल हो गए तो 5वां ट्रांजैक्शन उस मिड पे जाएगा ही नहीं, वो फौरन दूसरे एमआईडी पे जाएगा. तो उससे क्या होगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि आपने पीछे से 4 पेमेंट गेटवेज लगा रखे हैं, 4 सिस्टम्स हैं, और उन 4 में से जो बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा होगा उस पे ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू आपके ट्रांजैक्शंस राउट होते चले जाएंगे. So this is the way technology is helping out every business to actually increase the approval ratios, to increase the अच्छा, इससे क्या होगा, आपका कस्टमर भी हैप्पी रहेगा. अगर मान लीजिए आपका कस्टमर आपके वेबसाइट पे कुछ खरीद रहा है, 3 बार बेचारे ने पेमेंट करने की कोशिश करी, तीनों बार पेमेंट फेल हो गया, चौथी बार वो नहीं करेगा, किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएगा और खरीद लेगा चीज. राइट. So this actually helps to retain your customers. This helps to actually increase the approval ratio and therefore your benefits. और इसके अलावा एक चीज,
अगर आप एक सिंगल पेमेंट गेटवे पे रहते हैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट, तो फिर क्या होगा कि लेट्स से आप इंडियन मार्केट में अभी केटर कर रहे हैं, आपका इंडियन कस्टमर आया, उसने आपको रेज़ पे के थ्रू पे कर दिया, लेकिन लेट्स से आपके पास में आपकी वेबसाइट पे एक ग्लोबल कस्टमर आ गया और आपका पेमेंट गेटवे ग्लोबल पेमेंट्स ले ही नहीं रहा, तो उस केस में क्या हो गया, आपने लूज कर दिया अपना कस्टमर, आप ग्लोबल मार्केट्स को रीच नहीं कर सकते. But whereas in this cashier technology, if you are having a processor from Latin America or from Africa or from Europe or from UK, you can actually integrate multiple number of processors in a single API. और उससे ये होगा कि कहीं का भी कस्टमर हो, उसके रीजन के अकॉर्डिंग, उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपके पास में प्रोसेसिंग हो जाएगी, राउट हो जाएगा ट्रांजैक्शन उस स्पेसिफिक प्रोसेसर को. So that is also a better deal for every business actually. Right, right. And this is something very, very important. And these days, especially after COVID, businesses have gone online. I mean, most of the transactions Exactly. are happening online. I still remember, like before COVID, I would have never thought of buying grocery items at least online. Exactly. But grocery item, I would have never thought that I would go to some website and place order. Now I'm doing it. I mean, so many things that I never thought of doing online, I'm doing it. So if I'm doing it, Right. and you have highlighted something very, very important, which is if the payment fails, nobody bothers to do it again. Exactly. I did not buy so many things in my life just because my payment failed. And especially, True. कई बार तो ऐसा होता है, like if it is something that is not very, urgent for me, first time ही payment fail होगा ना, I will not go to the website and buy it again. हाँ, Very true. but सारे यूजर्स के सेम एक्सपीरियंस है. एज ए यूजर, इफ आई एम ऑन अ वेबसाइट, एक बार फेल हुआ, अरे ठीक है, चलो सेम चीज तो दूसरे से भी मिल रही है, वहां से पे कर देते हैं. Right. It is very important. Acha, tell me one more thing. Abhi you talked about the competition. Like when you started it, you were the only one. But now, obviously, when something new enters, competition is bound to happen. You cannot stop people. कि अभी हम कर रहे हैं तो तुम नहीं करो. So how do you differentiate yourself from your competitors? Okay. 3 things. Number 1, customizations. So most of the payment gateways that are available in the market, even today, उनमें customizations नहीं है. उन्होंने क्या किया कि एक basic चीज बना दी है, and then they'll give you only that. उसके अंदर जो already है, वही आपको मिलेगा. अगर आप उसमें changes चाहते हैं, अगर आपको अपनी organization के according कुछ needs हैं जो tweak करनी है, तो nobody does it. Here, what we have decided is कि हमारा हर कस्टमर एक नया एक्सपीरियंस लेके जाता है. किसी कस्टमर को कुछ डिफरेंट मेन्यू आइटम्स चाहिए, किसी कस्टमर को डिफरेंट थीम चाहिए, कलर्स डिफरेंट चाहिए, किसी कस्टमर को इवन जो बेसिक पेमेंट फ्लो है उसमें भी चेंजेस चाहिए, जो पेमेंट स्क्रीन्स आ रही हैं वो डिफरेंट चाहिए, उनके अपने थॉट्स होते हैं, किसी को एकदम फंकी स्टाइल पसंद है, किसी को बहुत प्रोफेशनल पसंद है. सो वी कस्टमाइज एवरीथिंग. Okay. बिल्कुल यूजर एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग हमने, इसलिए नहीं कि हमने ये चीज बनाई है तो हमें ये सेल करनी है इसलिए हम आपको ये देंगे, नहीं, आप बैठे हमारे साथ, आपको क्या पसंद है, हम उस तरीके से बना के देंगे. सो दिस इज वन. नंबर 2, वी ट्राई कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो ही ना, हमारे पार्टनर्स बन जाए. So what we do, जैसे हमारा तो कैशियर सिस्टम है. So for example, if we are talking about PayU or Paytm or Razorpay or any other payment gateway in India, let's say, they are our partners. So what we do is we are integrating their APIs into our cashier system, into our payment gateway. तो वो सारे हमारे पार्टनर्स बन चुके हैं, हमें एक्चुअली कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती. We tell them to see, you are getting business through us. तो आप जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है अभी हमारा मर्चेंट पेयू पे कर रहा है प्रोसेसिंग, लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ गए और पीछे से आ गए, उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि यार इसके साथ में इसको भी लगा सकते हैं. तो हो सकता है कि वो कुछ सेल्स आपके उसमें ऐसे ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए डाल दो, और अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो नेचुरली वो बेटर हो जाएगा. तो उस तरीके से भी हमारी जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जाते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव बिल्ट ओवर द इयर्स, and these 20 years of experience in relationships have actually got me friends. Many friends earn किए हैं. I've never earned, competitors. मेरे पास दोस्त हैं जो हमेशा आते हैं कि okay, you have this, I have this, let's collaborate together and let's make something better. So this is the way
I mean, in the whole industry, all over the world actually, not only in India, I don't think कि हमें कभी भी किसी से competition होता है. So जहाँ पे competition भी हो रहा होता है, like I had somebody Orify करके एक international payment gateway है, and I know them from 15-20 years. और उन्होंने जब अपना payment gateway शुरू किया, and they got lots of partners, तो हमने तो उनके साथ ही partnership कर ली, भाई आप आ जाओ हमारे साथ में. तो हमारे partners भी हैं, फिर आपके partners भी हैं, मिलके जुल के वर्क इन. सो ये भी एक देखने का नजरिया है इसलिए कि आप किसी में आप अपना कंपटीशन देखते हैं या उसी कंपटीशन को आप अपनी टीम के साथ मिला के आप 1+1 11 वाला. So that is the way I work with it. Right. And this is a very fresh perspective that you have shown us, because competition, sometimes I feel it is good. See, if you can collaborate with your competitors, then it is nothing like that. But if you are facing a competition, then I feel somehow it gives us the chance to improve as well. Because what is competitor doing better than us? Then we need to introspect and see how can we come up as better, where are the places where we are lacking, and we can improve. Right. Exactly. So this all depends upon your perspective. And at the same time, you have also talked about networking, like having friends and networking with people. Right. So how does networking help anyone in the business? Like, what suggestion would you like to give to our audience in terms of networking and building relationships? So I'll give you an example actually for this, rather than मतलब केवल बात करने के एग्जाम्पल से बहुत इजी हो जाता है. See, we are in the payments industry, और payments industry में हमेशा ही we are dealing with clients, और उनका ये financial industry naturally funds का मामला होता है. और funds कई बार, बहुत बार due to various reasons अटक जाते हैं. Funds are withheld, suspended and all those things. Now if you are having a good network, if people know you and you know people, तो फिर उन फंड्स को वापस लाना या कस्टमर को हेल्प करना, अपने क्लाइंट के फंड्स को निकालना इज वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज अगर एक्स को वाई जानता है, वाई को जेड जानता है, एक्स के वहां पे फंड्स फंसे हुए हैं, आप जेड से बात करोगे कि सी दिस इज माय क्लाइंट एंड वी नीड टू हेल्प हिम, एंड यू टॉक टू द पर्सन और यू टॉक टू द कंपनी एंड लेट्स कम ऑन एन एमिकेबल सॉल्यूशन टू दिस. And this network actually helps you to get these funds out for the client. और जब client ये देखता है कि see you have helped him out of the way to get his funds back to him, तो वो हमेशा के लिए आपका मतलब वो फिर क्लाइंट नहीं रह जाता, वो एक रिलेशनशिप बनती है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है. So in any field, and this is not only in finances, in any field, if you're having a good network and if that network is actually supporting you, then बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाता है. एंड सी इवन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो नेटवर्किंग से ही काम चलता है. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बातों से ही सॉल्व होती हैं, नेटवर्किंग से ही सॉल्व होती हैं. तो फॉर मी तो माय नेटवर्क इज एक्चुअली माय नेटवर्थ. So whenever I'm into any problem, whether it's related to tech or payments or partnerships or anything, it's my network, it's my people, my partners and friends, and जो मदद करते हैं हर चीज में. Even today I had a problem and I called a person. I've not been dealing with him professionally from last 1.5 years, but again I was dealing with him professionally from last 15 years. So at random, I called him and I said, so see, this is the problem. I need help from you. Oh, don't worry. I'll talk to the person and I'll get you an answer within 2 days. And solved. Oh, ho gaya easy. Network is बहुत important in any industry. Right. And you know what? I have always believed that we don't deal with organizations. We deal with the people. There are correct. जो brand मानकर चलते हैं. Like I have, my customers are this brand, this brand, this brand. I say no. Your customers are not your brands. Your customers are the people with whom you are dealing. Right. Yeah. If you consider this thing, networking and building relationships becomes much, much easier. Other than that, communication becomes very easy. Because when we talk to people, when we talk from the perspective of our product, this is my brand, my brand does this, my brand does that, then it does not reach the heart of the people. But when you talk from the perspective of all of us are humans, even if somebody is producing something, it is made for human beings, whether it is B2B or B2C. So it has to cater to a person, not to a brand or to an organization. Very true. Very true.
Okay, so Ruchi, what message would you like to give to our audience who are listening to you today? And if you can share any one insight that you have learned from your experience from starting a brand and taking it to such big heights, what would you like to tell to our audience regarding that? Okay, so it's not about a brand or profession or a professional thing only. I'll just give 3 lessons or life lessons which I have learned from my life. So number one, never be afraid of taking risks. जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, so you are always in that zone and you are happy with it and you don't have any aspirations, और aspirations को आगे बढ़ाने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. So never be afraid of risks. Number 2, never be afraid of failures. देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि जो घुड़सवार होगा वही तो गिरेगा, जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे. तो फेलियर्स आपको सिखाते हैं कि बेसिकली कहाँ गलती हुई है और उस गलती को कहाँ सुधारें तो नेक्स्ट टाइम ये फेलियर नहीं हो. एक और चीज, लोग डर जाते हैं कि ओके हम ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर फेल हो गए तो ये नुकसान हो जाएगा. तो उस केस में आई वुड लाइक टू एडवाइस कि कैलकुलेटेड रिस्क, जो ऐसा भी नहीं है कि रिस्क का मतलब है कि आप सब कुछ खत्म कर दो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेके अगर फेलियर्स भी होते हैं तो यकीन मानिए कि 4 फेलियर्स के बाद जो एक सक्सेस मिलेगी वो उन 4 फेलियर्स को कवर कर देगी. नॉट ओनली इन फाइनेंशियल टर्म्स और प्रोफेशनल टर्म्स, इन जनरल आपका जो सोच की मेच्योरिटी लेवल है, आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो इतना बढ़ जाता है कि जब आप 4 चीजों में आपको पता है कि यहाँ पे गलती हुई थी, तो 5वीं चीज में वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप आते हैं और फिर आप अपनी चीज को बढ़ाते हैं, एंड दैट हैज टू गेट अ सक्सेस, बिकॉज आप वो गलती करेंगे ही नहीं जो पिछली बार आप कर चुके. स्टार्टिंग तो नेचुरली गलतियों से ही होती. एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जरूरी नहीं है कि जो भी संघर्ष रहे हैं जिंदगी में, जो भी आपने स्ट्रगल्स किए हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स, वो आपके लिए एक्चुअली प्रॉब्लम की तरह रहे बाकी की लाइफ. Actually, I've seen not only in my life but in others' lives also that जो struggles होते हैं वो फ्यूचर की लाइफ को एक्चुअली बेटर कर देते हैं, बिकॉज आप पैशनेट हो जाते हैं उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए कभी आपने स्ट्रगल किया था. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सी दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट बहुत जरूरी है अगर कोई समझने की कोशिश करे तो. सी आई वाज बोर्न इनटू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, and but my parents were very enthusiastic about getting the best education for their children, so I was admitted into the best school of this city. अब एक इकोनॉमिकल डिफरेंस था, एक सोशल डिफरेंस था मुझ में और मेरे क्लासमेट्स में नेचुरली. तो बाकी सब चीजें तो ठीक रहती थी, भाई स्कूल में यूनिफॉर्म होती है वो सबकी एक जैसी होगी, किताबें हैं वो सबकी एक जैसी होगी, पढ़ाई हुई सबकी, बट देयर वाज अ बेसिक डिफरेंस. द होम दैट आई वाज लिविंग इन and the houses that they were living in, that was मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस था, थोड़ा बहुत डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस था. तो whenever I went over there तो मुझे लगता था यार इनके घर तो इतने खूबसूरत है और मेरा घर नहीं है वैसा, वैसा क्या मतलब कैसा भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस. तो उस वक्त वो चीज मेरे यहाँ बैठ गई दिमाग में और मुझे लगा कि मतलब घर की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एवरीवेयर आई वाज द बेस्ट, आई वाज बेस्ट इन स्टडीज, सब कुछ अच्छा था. बट व्हेन इट केम टू होम, वहां पे वो लोग इनवाइट करते थे, हम बड़ी खुशी खुशी जाते थे, लेकिन अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाने की हिम्मत ही नहीं करती थी, बिकॉज लगता था कि ये आएंगे एंड वो जितना भी एक बच्चे के दिमाग से सोचे तो वो जितनी भी रेपो है सारी खत्म हो जाएगी, तो नहीं बुलाते. And that thing, that struggle, that was actually a struggle. So that struggle actually motivated me कि भाई when I will grow up and when I will have my own finances in my own control, the most important thing that I want is a good home. और वो गुड होम, गुड बेटर बेस्ट करते 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 वो दिमाग में इतना छप गया that Ishleen, today I'm having 5 different houses and those 5 different houses are the best at their places. उससे बेटर कुछ है ही नहीं उन जगहों पे. Right. और वो एक पैशन. तो स्ट्रगल्स जो है या परेशानियां जो हैं वो केवल ऐसा नहीं कि आपको नीचे गिराती हैं, वो आपको एनकरेज करती हैं, वो आपको प्रेरणा देती हैं उस चीज को पाने के लिए जिस चीज के लिए आपने स्ट्रगल किया है. सो फॉर मी, टेकिंग रिस्क, नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, and then using your
weaknesses as actually your strengths. These are the most important lessons in life. And that's a powerful message indeed, you know. I completely resonate with it, and I really believe, and I'm very sure most of the people will resonate with this, कि हमारी लाइफ में जो एडवर्सिटीज आती है ना, वो हमें पुश करने के लिए आती है कि आप इससे बाहर निकल के कुछ बेटर कर सकते हो. एंड इफ यू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, then sky is the limit. I've seen so many people growing from trash and reaching new heights. So thank you so much, Ruchi. Thank you for being on the show. Thank you so much.